Brine. Brine is actually concentrated NaCl. तो सपोज करें कि ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, और इसके अंदर हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड्स डिप किए हुए हैं. पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, एनोड एंड कैथोड. कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में आयंस कौन से पड़े हैं? Na positive, chloride, H positive, OH negative. As soon as the circuit is switched on, the sodium ions will attract cathode and H positive ions will attract cathode. यहाँ पे chloride ions will attract anode, hydroxide ions will attract anode. लेकिन आपको पता है कि हमेशा सिर्फ एक ही आयन डिस्चार्ज करेगा. सो व्हाट हैपेंस एट द कैथोड? तो कैथोड पे क्या होगा? सोडियम कभी भी डिस्चार्ज नहीं करता एक्वस सॉल्यूशन में, चाहे वो डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेट हो. Sodium ion will only discharge when it is in the molten state. So therefore, H positive ions will win the competition because H positive ion is below sodium ion. So therefore, H positive ions discharge. And they give you H2 gas. What happens on the anode? अब एनोड के ऊपर क्लोराइड भी आएगा, हाइड्रोक्साइड भी आएगा. अगर तो ये होता डाइल्यूट NaCl, तो फिर हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज करता. Now since it is concentrated NaCl, so chloride ions will discharge. So therefore, chloride ions will discharge and form chlorine gas plus 2 electrons. अगर मैं को, अब आपको पता है कि ये जो आपके कैथोड पे रिडक्शन होती है, आपको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो रिडॉक्स तो हो ही गया. एंड इफ आई आस्क यू टू राइट द रिडॉक्स इक्वेशन, तो आप इसका रिडॉक्स लिख सकते हैं. और आपको पता है कि रिडॉक्स लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन नीड टू बी बैलेंस्ड. आई थिंक दे आर ऑलरेडी बैलेंस्ड. तो इलेक्ट्रॉन्स कट गए, तो क्या बचा? 2H positive plus 2 chloride ion gives you H2 plus Cl2 gas. Observations क्या आएंगी? One is effervescence of colorless gas. Observed at the cathode. Greenish yellow gas was observed at the anode. जी मूसा, बेसिकली देखें, जो कॉन्सेंट्रेशन का इंपैक्ट कभी भी कैटायन पे नहीं आता. कैटायन वही फॉलो करेगा जो रिएक्टिविटी सीरीज की स्टोरी है. हाँ, इसका इंपैक्ट आएगा ऑन द एनाइन. ऑल्दो हाइड्रोक्साइड आयन को डिस्चार्ज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्लोराइड आयन डिस्चार्ज करेगा. व्हाई? बिकॉज इट हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन. And third, we can say a level of electrolyte decreases. जी शामिर. सर मैंने आपको चार्ट पे मैसेज भेजे, वो आपसे रीड करने की कोशिश कर रहा हूं. ओके, मैं देख लेता हूँ. Okay. Excuse me, sir. No, Javeria, I don't write notes or give notes. सर इसमें Cl क्यों करेगा? क्योंकि Cl नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है. हम आपसे पूछेंगे 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाई क्लोराइड आयन विल डिसोसिएट, आई मीन डिस्चार्ज. So you'll say that because its concentration is high. Okay, thank you, sir. रिएक्टेंट्स को नहीं रिएक्ट कर. सॉरी, क्या? सर इसमें सारे रिएक्टेंट्स को नहीं रिएक्ट कर रहा. नहीं, एक बात याद रखें कि एक वक्त में एक आयन डिस्चार्ज करेगा हमेशा. इसे तो हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पढ़ते हैं.
जब तक सब्सटेंस मोल्टन होता है तो एक कैटाइन एक एनाइन होता है। जब सब्सटेंस एक्वस होता है तो यहाँ पे दो कैटाइन दो एनाइन है और में से एक आयन डिस्चार्ज करना है, इसलिए हम पढ़ते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट। हम फिर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं। तो आउट ऑफ सोडियम एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन विल डिस्चार्ज बिकॉज इट इज एक्चुअली less reactive and below the reactivity than sodium ion. In case of chloride and hydroxide, though hydroxide should discharge because it's less reactive, but chloride will discharge because its concentration is higher. So एक वक्त में एक आयन हमेशा discharge करता है। सर तो concentration का कोई effect नहीं होता positive reactivity series से cation No, no. So concentration has no effect on the cations. It only has an effect on the anions. Yes, Musa. सर concentration का खाली क्लोराइड पे फर्क पड़ता है या सारे एनाइन? The test for gases Again, will be sorry? done in acids, bases, solid. सर सारे एनाइन्स पे फर्क पड़ता है concentration का या खाली उस क्लोराइड का? नहीं, मतलब कि अगर अगर चाहे क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, जब भी कॉन्सेंट्रेट होगा तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड निकलेगा एक्सेप्ट हाइड्रोक्साइड। अगर डाइल्यूट है फिर हाइड्रोक्साइड निकलेगा, अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो फिर क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड निकलेगा, हमें डिस्चार्ज करेगा। ठीक है सर, सल्फेट वगैरह इस तरह के तो नहीं निकलेंगे ना नहीं, ये कभी अगर डिस्चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड हो? सर ये खाली कभी क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। हाँ, ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। Okay. सर तो इसमें क्या कहते हैं अपना वो जो अपना ऑक्साइड आयन है वो क्यों नहीं डिस्चार्ज होता, क्लोराइड आयन क्यों डिस्चार्ज होता है? मैं यहाँ पे सीरीज तो यहाँ लिखना सीरीज, एक सेकेंड। ये कैटाइंस, ओके मैंने ये दोबारा लिख दिया कैटाइंस और एनाइंस की सीरीज। ठीक है, देखिए जी, फर्स्ट 5 जो कैटाइंस हैं, ठीक है, ये कभी भी डिस्चार्ज नहीं करते एक्वा सॉल्यूशन में। सिंस सोडियम आयन और H पॉजिटिव आयन से H पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज किए क्लोराइड से। अगर ये डाइल्यूट NaCl होता, जो हमने कल भी पढ़ा था, तो हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज करता। लेकिन सिंस इट्स कंसंट्रेटेड, तो Cl नेगेटिव आयंस की अमाउंट they win the competition. So if we ask you 1 mark question in the paper, why chloride ions discharge? So that 1 mark is because the concentration of chloride ion is too high. Right? So now we get back to it. So basically, अब जो कैथोड है इसमें सोडियम आयन भी आया, H पॉजिटिव आयन भी आया, लेकिन यहाँ डिस्चार्ज कौन करेगा? H पॉजिटिव। At the anode chloride ion भी आया, हाइड्रोक्साइड आयन भी आया, लेकिन डिस्चार्ज कौन करेगा? क्लोराइड आयन। Why? Because its concentration is higher. Now, अब मुझे बताएं, सोल्यूशन में Na+ भी था, H+ भी था, क्लोराइड भी था, हाइड्रोक्साइड भी था। मेरे ख्याल से यहां से क्लोराइड डिस्चार्ज कर गया, यहां से H पॉजिटिव डिस्चार्ज कर गया, तो व्हाट यू लेफ्ट विद? तो you're left with NaOH, right? So NaOH aqueous is left behind. And the solution becomes basic. Okay. ये जो एनाइंस की रिएक्टिविटी सीरीज है, इसको ऐसे लिख लें, इसको ऐसे लिख लें। रियलिटी में बोथ आर करेक्ट वैसे बाय द वे। अगर आप मुझसे पूछे एक्चुअल क्या होती है, तो ये एक्चुअल है।
लेकिन आपने देखा होगा शायद ओ लेवल की बुक्स में या ओ लेवल टीचर्स आपको यही पढ़ाते हैं. तो ओ लेवल तक तो we accept it, but in A level and higher levels we take this blue one wrong. जी बेटा, एज पॉजिटिव आयन सोडियम आयन नीचे, तो एज पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज करेगा ना. So, sir, which one is beneficial to memorize? सॉरी, व्हिच वन इज व्हाट? Which one is beneficial to memorize? अच्छा, ये एनाइंस की चीज में कह रहे हैं आप, एनाइंस की. अब ये Yes, ब्लू sir. वाली याद रखें, ये एक्चुअल है बेसिकली. दिस इज व्हाट वी टेल यू, यू नो, आवरसेल्व्स इन द पेपर. Solution becomes basic is not an observation. So, sir, आपने क्या एक्चुअल वाली याद रखी? Or the blue one? सर क्लोराइड में भी क्यों नहीं डिस्चार्ज करा? नहीं, देखो जो आयन नीचे होता है वो डिस्चार्ज करता है हमेशा. तो सर फिर ब्रोमाइड और आयोडाइड क्यों नहीं कर रहे सर डाइल्यूट के अंदर? नहीं, अभी तो मैंने ब्रोमाइड आयोडाइड पे आया नहीं. अभी तो मैं आऊंगा उसके ऊपर. ओके सर, ये रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है या फिर कंसंट्रेशन पे करता है? बेसिकली असल में ये रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है. लेकिन जो अगर मैं सोल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड कर दूं तो जो एनाइंस हैं उनका डिस्चार्ज फर्क हो जाता है. लेकिन जो कैटायंस का डिस्चार्ज वही रहेगा, लेकिन जो एनाइंस है उनका डिस्चार्ज फर्क हो जाएगा. जैसा फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास डाइल्यूट NaCl हो, ठीक है, अब इसमें Na प्लस क्लोराइड, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव. अब Na प्लस में से H पॉजिटिव आयन विल डिस्चार्ज. क्लोराइड और OH में से सिंस OH नीचे है तो OH विल डिस्चार्ज. ये नॉर्मल केस है. अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl हो मेरे पास, Na plus, H plus, chloride and OH negative. Out of Na and H, right, H plus ion will discharge. So concentration will not affect the discharge of cations. Lekin in case of anion, though chloride ion is above in the reactivity series, it should not discharge, but since its concentration is too high, it gets discharged. So it's discharged. So यहाँ पे I can say आखिर में क्या बचा? तो आखिर में salt, आखिर में NaCl बच रहा है, concentrate हो रहा है. So I can say salt becomes concentrated. क्योंकि water निकल गया. और यहाँ पे I can say कि NaOH is left behind. Solution alkaline हो गई है. Yes, Novera. Normally, जो metals अभी I'll take your questions. पहले मैं जरा पढ़ा लूं. अभी I'll take your questions. Just give me 5 minutes. नो मिनाहिल, एसिड और बेस हमेशा नहीं होता पीछे. ये मैंने अभी बताया आपको यहाँ पे कि सॉल्ट बन गई है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेट हो रही है. आई थिंक अभी आई स्टेटेड दैट कि एवरी टाइम एसिड और बेस लेफ्ट थोड़ी होगा. वो तो डिपेंड करेगा कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है. लाइक इन दिस केस, I mean, I'm left with salt in its concentrated form because water is, water has gone away. और यहाँ पे I think I'm left with NaOH. So it's not mandatory that acid base needs to be left behind. Excuse me, sir. Okay, I'm moving on now. सर, तो बेसिकली अगर सर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का फर्क होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड वाला जो है उसके अंदर जो आपकी वो
आपकी कंसंट्रेशन को दिखाया था बेसिकली। हाँ, यानी कि इन केस ऑफ एनाइंस ओनली, मतलब कि अगर आपने सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेट कर दिया है तो फिर जो खाली जो फर्क आ सकता है वो एनाइन पे आ सकता है। सर हमेशा जो आएगा या आप फिर मतलब आ सकता है सर? नहीं, इसका फिर हम हमेशा एनाइन में फर्क आएगा। और जो कैटायन है उस पे लाइक उस पे कोई फर्क नहीं होगा, कैटायन पे सिर्फ एनाइन पे फर्क आएगा। ओके, नाउ लिसन प्लीज केयरफुली नाउ एवरीवन, प्लीज वेरी केयरफुली। अब देखिए, सपोज करें अगर मेरे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास होता डाइल्यूट लेट्स से सोडियम आयोडाइड, ठीक, और मेरे पास होता कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम आयोडाइड। अब डाइल्यूट सोडियम आयोडाइड में कौन कौन से आयन्स हैं? Na प्लस एंड H पॉजिटिव, आयोडाइड एंड OH नेगेटिव, ठीक। तो जो आयन नीचे है वो डिस्चार्ज करेगा हमेशा। अब आई थिंक आउट ऑफ सोडियम एंड H पॉजिटिव, आई थिंक H पॉजिटिव आयन विल डिस्चार्ज, ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज कर देगा। आउट ऑफ आयोडाइड एंड OH नेगेटिव, तो आई थिंक आयोडाइड में OH नेगेटिव में लेट्स सी दिस वन, आयोडाइड में OH नेगेटिव, आई थिंक आयोडाइड विल डिस्चार्ज, isn't it? क्योंकि आयोडाइड नीचे है OH से, तो आयोडाइड डिस्चार्ज करेगा। So therefore, iodide ions discharge. Now in this case, fortunately again, सर तो अभी तो आपने कहा था कि हम दूसरी सीरीज भी याद नहीं देखिए, बेसिकली आपने आपने दोनों जिंद रखनी है, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर तो लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मैं इसलिए एक्स्ट्रा बता रहा हूं क्योंकि अगर एग्जाम में कभी सवाल आ जाए तो, हालांकि एज पर सिलेबस आना नहीं चाहिए, एज पर सिलेबस रिक्वायरमेंट आना नहीं चाहिए, लेकिन समटाइम्स इन द एग्जामिनेशन सम थिंग्स गो बैड, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, मैंने वो रिएक्टिविटीज बताने की, ठीक है। अगर कभी सवाल आ जाए आयोडाइड और ब्रोमाइड के ऊपर, अगर कभी सवाल आ जाए आयोडाइड और ब्रोमाइड के ऊपर अपार्ट फ्रॉम क्लोराइड, आज तक आए से क्लोराइड पे ही है, अगर आयोडाइड और ब्रोमाइड पे क्वेश्चन आ जाए तो आपने हमेशा आयोडाइड और ब्रोमाइड ही डिस्चार्ज करना है, इररिस्पेक्टिव कि वो डाइल्यूटिंग या कॉन्सेंट्रेटेड है। ये बात याद रखिएगा। मैं फिर बोलता हूं, बेशक लिख लें, इन केस ऑफ क्लोराइड अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज करेगा, अगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्लोराइड आयन डिस्चार्ज करेंगे, एज आई वाज टीचिंग यू अर्लियर। In case of iodide and bromide, whether it's dilute or concentrated, iodide और bromide discharge करेंगे, हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज नहीं करेगा। ये बात याद रखिएगा प्लीज। Sir, can you please write it for us? I say it again, लिख लें। No, sir, please लिखते हैं like there's a connectivity issue, so your voice is lagging to you. Okay. I'm writing in the chat. सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के ब्रोमाइड और आयोडाइड का सवाल आ जाए? 1% तो है ना।
G, should I go on now, everyone? There we go. Again, I'm left with NaOH. In case of concentrated potassium iodide, आपके पास कौन-कौन से आयन्स हैं? Na plus, H positive, iodide and OH negative. सर Na plus या K? सर K plus नहीं होएगा. Yeah, it is potassium, K plus. चले. Now, everyone, out of potassium and hydrogen ion, of course, again H positive ion discharge. फिर potassium की भी discharge नहीं करेगा. Now, out of iodide and hydroxide, guys, everyone, देखें, iodide और hydroxide में से again iodide will discharge. क्यों? क्योंकि iodide तो वैसे ही नीचे है, वो तो आपको डाइल्यूट में करी जा रहा है, आपने उसको कॉन्सेंट्रेट कर दिया, वो तो कंफर्म करेगा. सर फॉर एग्जांपल सर अगर हम आयोडाइड को ऐसे ऊपर ले लें रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, लेकिन अगर इस केस में कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो फिर तब भी आयोडाइड डिस्चार्ज करेगा ना? हाँ, yes, exactly. So therefore, again, I think you are left with potassium hydroxide left behind. Sir, if we chose the first reactivity series you wrote, then according to that, sir, OH negative needs to discharge. हाँ, अगर तो let's say for example first reactivity अगर हम choose करते तो फिर आपको dilute potassium iodide में फिर hydroxide discharge करता. लेकिन reality पता है क्या है? Reality ये है कि असल में OH ऊपर होता है ये ब्रोमाइड्स और आयोडाइड से. तो अगर वो dilute हो या concentrated हो, ब्रोमाइड और आयोडाइड ही डिस्चार्ज करेंगे इन दिस सॉल्ट सॉल्यूशंस. सर दूसरे वाली क्यों पढ़ाते हैं फिर? सर भी दूसरे वाला बेसिकली it is what I have been saying to Cambridge as well. लेकिन उन्होंने जो बुक्स में लिख दी हुई थी, इसके पीछे एक रीजन भी है. असल में हम ओ लेवल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं पढ़ाते, ईएमएफ वैल्यूज नहीं पढ़ाते, हम पढ़ाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट के थ्रू ये वाली सीरीज कुछ सही दिखती है, लेकिन जो एक्चुअल रीजन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके थ्रू ये चीज गलत दिखती है. इसलिए हम इन हायर लेवल्स ऑफ ए लेवल व्हेन वी टीच यू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ वैल्यूज, तो फिर हम आपको ये वाली सीरीज स्टेट करते हैं. कितने सालों से वो लेवल है, राइट? आज तक हमने कभी सवाल नहीं पूछा आयोडाइड और ब्रोमाइड के ऊपर, अनलेस हम आपको उसके बारे में हम कभी आपसे स्ट्रेट अपफ्रंट नहीं पूछते. वी ऑलवेज गिव यू इंफॉर्मेशन एंड देन वी आस्क यू टू राइट. सर तो अगर that's why we've always been asking you questions straight on the chloride ions. जी प्लीज पूछे क्वेश्चंस. सर एग्जाम के अंदर अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, तो फिर ये ब्लू वाली हम फॉलो करेंगे. हाँ यस, लेकिन आंसर एक ही आएगा. बट हाउ सर? क्योंकि आपने हमेशा आयोडाइड और ब्रोमाइड डिस्चार्ज करना है, ये बात याद रखिए. लेकिन सर अगर हम ब्लू वाली को फॉलो कर रहे हैं तो हम तो OH आयन को डिस्चार्ज कर देंगे ना. मैं भी कह रहा हूँ ना कि आपने हमेशा आयोडाइड और ब्रोमाइड डिस्चार्ज करना है, अनलेस दे स्टेट यू अदरवाइज, अनलेस एग्जामिनर खुद ना लिख दे उस पेपर में. So we will follow the actual one and we will discharge the bromide and iodide. Yes. So सर लेकिन आप दूसरे लोगों ने होते हैं ग्रुप 7 में. सॉरी, ग्रुप 7 में और भी तो एलिमेंट्स होते हैं जिनके हैलाइड आयंस बन सकते हैं, तो वो नहीं होता सीरीज में. You're right. हम फ्लोराइड और एसिटाइड नॉर्मली पता है केमिस्ट्री में ओ लेवल हो या ए लेवल हो, इन दो लेवल्स के ऊपर हम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप और लास्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप नहीं पढ़ते नॉर्मली, क्योंकि वो जरा से एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं. इसलिए आप कभी गौर कीजिएगा, ज्यादा हमारे लेक्चर्स में, बुक्स में, क्वेश्चंस में यूजुअली हम फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को इग्नोर कर देते हैं.
just for their anomalous behavior and that's all. So ये होगी cation की which you have to use and you have to remember ये वाली as per examination is concerned. ठीक है. Otherwise अगर हमने ये वाली अप्लाई करवानी होगी तो हम आपको खुद इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे. अगर नहीं देंगे तो आप ये वाली अप्लाई करनी है प्लीज, ये वाली जिसमें मेरा कर्सर मूव कर रहा है. So dilute sodium iodide में H positive ion will discharge and not sodium ions. In case of iodide and hydroxide, iodide will discharge because iodide is below the reactivity series again than OH. Now when it is concentrated, again H positive ion will discharge and not this potassium ion. और यहाँ पे iodide ही discharge करेगा क्योंकि वो नीचे है. अगर वो नीचे है, वो डाइल्यूट में कर रहा है तो कांस्टेंट तो फोर्स करेगा. तो प्लीज डोंट फॉरगेट इट. Now, moving on. Let's say there is a question. Suppose करें कि I have a glass U-tube, ठीक, और इसके अंदर let's say it is concentrated NaCl aqueous और मैंने इसमें ग्रेफाइट रॉड्स डिप किए हुए. और मैंने साथ में अभी सपोज करें कि अभी स्विच ऑन है. रिवाइंड कर दूं. Let me know when can I move on, please. Okay, there we go. और इसके अंदर let's say it is concentrated NaCl aqueous और मैंने इसमें ग्रेफाइट रॉड्स डिप किए हुए. और मैंने साथ में अभी सपोज करें कि अभी स्विच ऑन है. अभी स्विच ऑन है और मैंने इसमें लिटमस सॉल्यूशन डिप की है. आई होप आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैंने भी पढ़ाना है आपको. एसिड में लिटमस सॉल्यूशन इज रेड, बेस में लिटमस सॉल्यूशन इज ब्लू और न्यूट्रल में इट्स वायलेट. लिटमस सॉल्यूशन नहीं करेगा. तो इस टाइम पे सॉल्यूशन वायलेट दिख रही है आपको क्योंकि NaCl इज अ न्यूट्रल सॉल्ट. जी अमर. सर वो मैंने पहले क्वेश्चन पूछना था तो उसमें सर वैसे क्वेश्चन मेरा ये था कि सर वो मैंने क्वेश्चन मेरा ये था कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं उनमें ये क्यों करते हैं डिस्चार्ज अपना क्लोराइड आयंस वगैरह और दूसरे. क्योंकि पता है उसमें सिंस आयंस की अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है. ये बात बिल्कुल इस तरह होगी. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको दो टीम्स है, एक टीम ए और एक टीम बी है, ठीक है. अब जो टीम ए में 50 पीपल भागने लगे हैं और टीम बी में खाली 4 पीपल भागने हैं. अब मैं 50 और 4 अगर मैं इनको इकट्ठे दौड़ा दूं तो जो टीम में 50 पीपल हैं वो तरह से जो आप बाकी 4 हैं उनको उनको वैसे गिरा देंगे और खुद जीत जाएंगे. Isn't it? Same happens here. Since chloride ion की concentration is too high and hydroxide is too low, so they actually win the competition. Sir, then why ज्यादा doesn't this अमाउंट concept, आके ट्रैक करती हैं. sir, so then why doesn't this concept apply on the sodium ion? Okay, ये it's a very valid question basically.
अच्छा, सोडियम आयन पे वो इसलिए प्लानिंग करता है क्योंकि सोडियम आयन के लिए अब यहाँ पे अब बात आ जाएगी फिजिक्स की, जो हम आगे पढ़ाते हैं इन हाई लेवल्स ऑफ लर्निंग, इन ए लेवल इनफैक्ट। आप लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स में V=IR, वोल्ट मीटर पढ़ते होंगे, या अगर आपने कभी कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के एक्सपेरिमेंट्स किए लेबोरेटरी में जाके, तो अगर वोल्ट मीटर शोज अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारा सर्किट ठीक है। लेकिन इफ द वोल्ट मीटर शोज अ नेगेटिव वैल्यू, तो आप कहते हैं कि आपने सर्किट में कुछ गलत किया। सेम हैपेंस हियर। बेसिकली सोडियम आयन की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नेगेटिव इन एन एक्वा सॉल्यूशन, तो वो कभी भी डिस्चार्ज नहीं करता। यानी कि आपके नेगेटिव, आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये है कि इट कैन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन्स, इट हैज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सिंस उसने ऑलरेडी लूज किए हुए हैं, तो वो गेन नहीं करना चाहता। सो दिस कनेक्ट्स विद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैल्यूज। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी अयान। Sir, if you would do the electrolysis of dilute aqueous sulfuric acid, then you will get H plus ions and then OH minus. So if SO4 is left behind, so what will be formed at the end? Like how is it possible if one ion is left at the end? No. So हम ये कहेंगे कि sulfuric acid is becoming concentrated. Okay. Sir, वो कैसे? Sir, आप इसकी electrolysis करें, how it will become concentrated? सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस में सल्फ्यूरिक एसिड से H पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं और सल्फेट आ रहे हैं, वाटर से भी H आ रहे हैं और हाइड्रोक्साइड आ रहे हैं। सल्फेट और OH में से OH डिस्चार्ज कर गया। H आई मीन है तो कॉमन ही, चाहे सल्फ्यूरिक हो या वाटर का हो, H ही है। इसका निकाल दे, एक ही मर्जी आपकी, राइट। तो अगर इसका रिमूव करें तो लेट्स फॉर एग्जांपल, तो आई थिंक वाटर के कंपोनेंट्स रिमूव हो रहे हैं, तो आई कैन से सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट हो रहा है क्योंकि वाटर इज बीइंग रिमूव्ड, इजंट इट? सही है सर। Okay. Now guys, everyone. So basically मेरे पास concentrated NaCl है और इसमें लिटमस सॉल्यूशन है। इस टाइम पे ये सॉल्यूशन, इस टाइम पे ये वायलेट है, राइट? पॉजिटिव, नेगेटिव, एनोड एंड कैथोड। तो जी एनोड पे रिएक्शन क्या होगा? अब concentrated NaCl में सोडियम आयन भी है, H पॉजिटिव आयन भी है, क्लोराइड भी और OH भी है। तो एनोड पे क्या होगा? एनोड पे क्लोराइड आयंस विल डिस्चार्ज बिकॉज इट्स concentrated NaCl. So chloride ions will discharge at the anode. तो यहाँ पे आपको ग्रीनिश येलो गैस के कलर्स बना लेते हैं बल्कि। सो ग्रीनिश येलो गैस के बबल्स दिखेंगे आपको यहाँ पे, राइट? एंड एट द कैथोड H positive ion will discharge. और यहाँ पे आपको दिखेंगे कलरलेस गैस के बबल्स, ये क्लोरीन और ये H2। सो यहां से H पॉजिटिव निकल गया, क्लोराइड आयन निकल गया, सॉल्यूशन क्या बची? NaOH। सो आई कैन से कि ये सारी सॉल्यूशन ब्लू होना शुरू हो जाएगी। दिस होल सॉल्यूशन विल स्टार्ट टर्निंग ब्लू, कि जब अंदर NaOH बचेगा तो ये सॉल्यूशन ब्लू होना शुरू हो जाएगी। तो द सॉल्यूशन विल स्टार्ट टर्निंग ब्लू। सो आई मीन ऑन द कैथोड साइड blue solution will be observed. क्योंकि the ion responsible is hydroxide to make it blue. लेकिन ये एनोड पर भी ब्लू दिखनी चाहिए, लेकिन एनोड पे टर्न्स कलरलेस। यहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व। Why? Because chlorine is a bleaching agent. क्योंकि क्लोरीन ब्लीचिंग एजेंट है, तो ब्लू जो कलर को ब्लीच कर देगा एंड सॉल्यूशन विल अपीयर एक्चुअली कलरलेस अराउंड द एनोड। How will the solution turns blue? I think it's a matter of common sense because I told you that कि H पॉजिटिव भी निकल गए, क्लोराइड आयन भी निकल गए, तो अगर एंड में सोडियम हाइड्रोक्साइड बचा है, इसको बेस कहते हैं, बेस में सॉल्यूशन ब्लू होती है, राइट? तो द सॉल्यूशन अपीयर्स एज ब्लू।
अगर एनोड पे क्लोरीन गैस ना निकल रही होती तो फिर एनोड पे भी ये ब्लू ही होता, लेकिन सिंस क्लोरीन इज ब्लीचिंग एजेंट, right? So basically Cl2 gas is a bleaching agent, so therefore it will actually decolorize the blue solution around the anode. Gino Vera. Sir, you said that most metals are of grayish color, लेकिन उस दिन हमने exception पढ़ी थी कि when copper is deposited, so it has a pink color. So, Pink. or Yeah. exception constant. It's only copper. Okay, I'm moving on now. It's a question, please, everyone. सर जी बच्चा। सर क्लोरीन का मुझे समझ नहीं आया ये पार्ट कि अगर क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसकी क्या ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ग्रीनिश येलो गैस लिखेंगे या फिर डीकलराइजेस द सॉल्यूशन? दोनों लिखेंगे। सॉल्यूशन वहां पे कलरलेस होगा, व्हाई? बिकॉज़ क्लोरीन इज ब्लीचिंग ना, तो वहां पे सॉल्यूशन ब्लू अपीयर नहीं करेगी। आपको बबल्स दिखेंगे ग्रीनिश येलो गैस के और सॉल्यूशन कलरलेस दिखेगी। ओके सर। A, B, C, D. State the products at A, B, C, D. A may I have concentrated HCl, ACl. इसमें I have बल्कि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं, यहाँ पे इस तरह करें, यहाँ पे आप लिख लें dilute ACl aqueous, यहाँ पे भी आप concentrated copper chloride aqueous. चलिए everyone, you have to state the fluorids at A, B, C and D. और जो मैं सवाल पूछे ना वही लिखा करें। मैंने आपसे पूछे ओनली द प्रोडक्ट्स, तो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे खाली प्रोडक्ट्स के, आप इक्वेशंस नहीं लिखेंगे, ठीक है? इक्वेशंस वैसे आप अपने लिख लें लेकिन नॉट फॉर द आंसर। यू हैव टू स्टेट द प्रोडक्ट्स एट ए बी सी एंड डी। प्लीज स्टार्ट। Quick guys. सर इसमें हम ए और बी में से कैथोड एनोड किसको लेंगे? ठीक है, देखो बेसिकली जो जो ए है, ए देखें वो अटैच्ड है आपके बड़ी लाइन से अटैच्ड है, तो ए तो एनोड हुआ तो ऑटोमेटिकली बी कैथोड हो जाएगा। और फिर वहां से डी देखें तो डी इज कैथोड तो ऑटोमेटिकली सी एनोड हो जाएगा।
ओके, सो बेसिकली ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो टेक्निकली फिर ये हुआ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव हुआ, फिर ये हुआ पॉजिटिव, ये नेगेटिव हुआ, राइट? अब जो डाइल्यूट KCl में K पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, क्लोराइड है और OH नेगेटिव है, तो ये नोड के ऊपर हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज करके ऑक्सीजन गैस देगा। आई होप यू नो द इक्वेशन, ठीक है? देन सर हम वाटर में नहीं लिखेंगे H2O। अच्छा, नहीं, वाटर को हम इसलिए एज ए प्रोडक्ट डील नहीं करते बिकॉज सिस्टम ऑलरेडी एक्वस है, ऑलरेडी वाटर पड़ा हुआ है, इसलिए हम ऑक्सीजन गैस को एज ए प्रोडक्ट ट्रीट करते हैं। ओके, नाउ एट द सर इलेक्ट्रोड अगर हम बी, दोनों लिख दें तो मार्क्स लूज हो जाएंगे। नहीं मार्क्स लूज नहीं होंगे, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं लिखा होगा तो मार्क्स लूज हो जाएगा। ओके, नाउ यू नो एट द इलेक्ट्रोड बी, तो पोटेशियम कभी डिस्चार्ज नहीं करेगा, इट्स H पॉजिटिव, क्योंकि याद रखने कि पोटेशियम आयन कैन ओनली डिस्चार्ज व्हेन इट्स मोल्टन सॉल्ट, सो देयरफॉर इट्स हाइड्रोजन। सी पे आ जाए, इट्स कॉपर आयंस एंड H पॉजिटिव, क्लोराइड आयंस एंड हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोजन और कॉपर में से चाहे सॉल्यूशन डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेट, उसमें आई मीन डिस्चार्ज कॉपर ही हाइड्रोक्साइड करता आयन है। जब भी डिस्चार्ज करेगा ऑक्सीजन और वाटर देगा, तो ऑक्सीजन इज द मेन प्रोडक्ट। ऑक्सीजन लिख लें OXYG एंड ऑक्सीजन गैस लिख लें O2 लिख लें, एक ही बात है। Therefore, at the anode, I mean D के ऊपर, I mean the cathode D, इस पे आपका डिस्चार्ज करेगा कॉपर आयन, तो कॉपर बनेगा, और यहां पे आपको यू नो पिंक डिपॉजिट्स भी ऑब्जर्व होंगे, इसका मास भी इंक्रीज करेगा, सो मास ऑफ डी विल इंक्रीज। और Cl और OH में से कौन डिस्चार्ज करेगा? Cl, बिकॉज सोल्यूशन इज कॉन्सेंट्रेटेड। अगर ये डाइल्यूट होती तो फिर हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज करके ऑक्सीजन गैस देता, तो इट्स क्लोरीन। सर बी और सी तो पावर सप्लाई से कनेक्टेड ही नहीं है। नहीं है, ये बीच में आयंस है ना, बीच में आयंस फ्लो करते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहा है, यहां भी आयंस है, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहा है। ए के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है OH नहीं होना चाहिए? बीच में आयंस कैरी द चार्ज। सर ये ए के अंदर जो प्रोडक्ट है ये OH नहीं होना चाहिए? नहीं बेटा, OH आयन तो डिस्चार्ज करेगा ना, OH आयन तो रिएक्टेंट है इस वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज करके O2 देगा ना। वो इक्वेशन नहीं याद, 4OH नेगेटिव गिव्स यू 2H2O plus O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन गैस बनती है ना जब हाइड्रोजन डिस्चार्ज करता है, तो हमने तो प्रोडक्ट लिखना है। जो आप कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं व्हिच आयन विल बी अट्रैक्टेड राइट टुवर्ड्स A, तो आप लिखते हो OH नेगेटिव आयन, लेकिन प्रोडक्ट ऑक्सीजन गैस में नहीं। सर मैंने चीज पूछी थी जी सर, अगर पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड डाइल्यूट हो तो क्या कहते हैं आपका आयोडाइड और ब्रोमाइड होंगे वो या नहीं? आयोडाइड और ब्रोमाइड डिस्चार्ज करेंगे, हाँ डाइल्यूट सॉल्यूशन करेंगे। यस ओके। नेगेटिव टर्मिनल से निकलता है और पॉजिटिव में जाता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन। देखो, अगर H पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और अगर हाइड्रोक्साइड डिस्चार्ज करेगा तो फिर ऑक्सीजन गैस निकलेगी। आई नो वाटर इज आल्सो देयर इन द इक्वेशन, बट सिंस वाटर वाज आल्सो प्रेजेंट अर्लियर, so water is not considered as a new product, so you write oxygen. If hydroxide discharges, so you write oxygen. Okay, moving on. मेरा एक और क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने बताना है इनमें से in which of the cells
will the bulb glow and electrolysis is taking place? Observe कीजिएगा please. Sure guys, मैंने 4 cells बनाए हैं, नीचे मैंने 2 सवाल लिखे हैं, इन सब के आगे please place a tick and cross. Okay, guys, last question and then we end. Brilliant, Azan. Brilliant. Brilliant, I know. Hmm. एक गलती होगी हारिस. नो, more than गलती हो गई है. चलें, I'll do it now. Will the bulb glow in this? Yes. Will the bulb glow in this cell? Yes, because mercury is a metal. Will the bulb glow in solid copper sulfate? No. मैंने lead का piece लगाया भाई. Yes, it will glow because it's a metal. Lead is a metal. Now, this is electrolysis. After all, it's an ionic compound. This is not electrolysis. It is simple electrical conduction. This is not electrolysis. This is not electrolysis. Electrolysis में तो, I mean, electrolysis तो होती compound की है. वो तो होती compound की है. Right. Are you all clear, guys? Anyone who is unclear at the moment? So tomorrow will be the last lecture of electrolysis. इस weekend के ऊपर I'll post the lecture. Are you clear, guys? Everyone. Of the. So basically, we left learning on electrolysis of concentrated solutions, and now next we learn about the nature of electrode and the industrial application of electrolysis. Okay, and we'll move further. Excuse me, sir. जी बच्चा.
सर थर्ड और फोर्थ की रिकॉर्डिंग प्लीज भेजना, थर्ड और फोर्थ ईयर पर। थर्ड फोर्थ जरा ऐसा करना कि ग्रुप में लिख दो ताकि एटलीस्ट सर मैंने यू लिख नो दिया। आई रिमेंबर। लिख दे बस, ठीक है, आई डू इट। थैंक यू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।